भी ले लेते हैं। अब हमारे साथ मैनहट्टन बेंचेस के संतोष राय भी बने हुए हैं। मॉर्निंग संतोष, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट विद अस। आपको काफी इंतजार करवा दिया हमने। सबसे पहले आपका एक व्यू जानना चाहेंगे। जिस तरह से एफओएमसी मिनट्स निकल कर आए उससे तो क्लियरली लग रहा है कि अब 0.5% की बढ़ोतरी ऑलमोस्ट सब्सिक्वेंट बैठक में होती रहेगी। क्या बाजार इसके लिए तैयार है? क्या बाजार ने प्राइसिंग कर लिया है? कल की रैली के क्या मतलब है? Yeah, I think good morning to all. ये 50-50 point तो plan में था. I mean, the market had anticipated that. But the only issue, the positive thing about the minutes was कि सिर्फ 50-50 होने वाले हैं. That's what they said. And पहले लगा था कि शायद करते जाएंगे 50-50 और आगे भी जाएंगे. पर अब 250 तो definite है. बाद में they're going to be data dependent and शायद 25 करेंगे उसके आगे. So उनका जो target है कि 2.5 to 2.75 as the neutral rate. I think एक तरह से clarity आई है. They were less hawkish than what the market thought they were. So I think that is a positive. So I think you will see some positive reaction tomorrow. But then उसके बाद market close के बाद Nvidia के reports आए, technology stocks are going to be under pressure. So I think overall, the path of least resistance is still down. Anything, it's all bear market rallies if there are, क्योंकि there are a lot of headwinds in the market right now. तो bullish होने का तो सवाल ही नहीं होता. If anything, it's going to continue on a bear market down for a while. संतोष, अगर क्योंकि कल के हमने देखा है कि सारे के सारे मेंबर्स ऑलमोस्ट इस फेवर में थे कि 0.5% आगे और बढ़ोतरी हो सकती है। आप भी बात क्लियर कर रहे हैं कि हो सकता है आगे चल के 0.25% यानी क्वार्टर % की ये बढ़त आगे चल के करते रहे। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे हैं, ये अगले 2 क्वार्टर्स में या फिर हम अगले 3 से 4 महीने में ये फ्रूट्स आते हुए दिखेंगे या फिर थोड़ा टाइम लगेगा, हमको वेट करना पड़ेगा इसके लिए? Right, that's the thing. That's the big hope कि शायद market will do the Fed's job. शायद उनको नहीं करना पड़ेगा इतना aggressively बढ़ाना पड़ेगा. But headwinds तो है. Inflation is very high. We are in the demand destruction zone. I would say in terms of the staples, in terms of oil and all that stuff. So धीरे-धीरे I think बढ़ते जा रहा है and it's really eating into the economy. So I think that's a big problem. Headwinds काफी है. And then overall, as the Fed chairman said, and even the minute said, that China is a big concern. Russian war is a big concern, Russia-Ukraine war. So I think there are headwinds that can get worse. And then the labor imbalance, job market imbalance has to be corrected. So I think what he said was, we are going to watch. We will be data dependent, but there are a lot of headwinds. Let's see. But for now, I think 50-50, they're happy with the 250 basis point raises, and then maybe more, maybe less. But he said, whatever it takes, I am going to clamp down inflation. If I need to do more, I will do more. And it may cause a lot of harm in terms of labor market and costs, but I am going to stay on top of this. That was his pretty much his line. So I think that we have to worry. I think that's what the market is trying to digest. We knew they were aggressive, but hopefully that the second half or the later half of the year, later part of the year rather, things will cool down and things will kind of come to some kind of a equilibrium in terms of labor market and prices. So I think that's the hope. Let's see. अभी तो headwinds तो काफी है. रहे हैं और एफओएमसी ने ये भी कंटेम्पलेट किया है कि स्टांस जो है न्यूट्रल से यहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव करते हुए वो दिखेंगे। संतोष, हाय, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। एफओएमसी के मिनट्स काफी इंपॉर्टेंट रहे, लेकिन साथ यूएस Q1 जीडीपी के डेटा भी आने वाले हैं। ऑफ कोर्स इसका रिएक्शन जो है कल सुबह हम मार्केट्स में देखेंगे, लेकिन पिछले डेटा को अगर देखें, सरप्राइजिंग ड्रॉप 1.4% का जीडीपी में देखने को मिला था और इस बार के एंटिसिपेशन भी अराउंड 1.3% ड्रॉप के हैं। जीडीपी को लेकर आपका नजरिया, किस तरह के ग्लोबल सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं? Yeah, वही consensus है कि 1.4%. I think this is the final read on the first quarter number. So I think that's the thing. So I think recession का definition होता है 2 consecutive quarters of negative GDP growth. I mean, fourth quarter last year was 7% growth. This is the first negative one, and let's see what the next quarter will bring. So अभी recession तो अभी तो नहीं है forecast. I mean, there's speculation that we might get there maybe next year or even 2000 later, and in the later half of next year. But at this point, more than recession, it's the slowdown is for sure. The big risk is stagflation, where we just go too hard. So I think it's a very delicate balance जो Fed को करना है, ज़्यादा ना बढ़ाए और economy को destroy करे एक तरह से, पर कम भी ना करे कि inflation बढ़ता जाए. So I think they have a job on their hands.
land. Hopefully they'll get it right, soft land the economy. So a lot of issues at this point, but the one thing is for sure, there is uncertainty. Path of least resistance is down for the economy, for the market as well. So I think we just have to stay the course and be steady. राइट संतोष, मेनी थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबह सुबह ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर, एफओएमसी के मिनट्स पर, इन्फ्लेशन पर, जीडीपी पर ओवरऑल अपना नजरिया हमारे बीच रखने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए